क्या आपको पता है कि आपके फेवरेट फ्रेंच फ्राइज आर नॉट फ्रॉम फ्रांस बिकॉज दे आर फ्रॉम बेल्जियम। और ये कब दिखे थे पहले बेल्जियम में? लेट 1600s। और बेल्जियम में जब इन्हें खाते तो उसके ऊपर क्या लगाते? फ्राइड एग डाल देते। और कनाडा में इसके ऊपर क्या डालते? सब कुछ, ग्रेवी, चीज, मीट मिन्स। और हॉलैंड में इसके ऊपर क्या डालते? ढेर सारा मेयोनेज। आई थिंक हमारा इंडिया वाला ही बेस्ट है क्योंकि इंडिया में हम इसके ऊपर डालते हैं केचप। That's right. We are so happy to catch up with you on You versus YouTube. Hello. और ये है हमारा सेकंड एपिसोड ऑफ यू वर्सेस यूट्यूब। क्या गेम है यहाँ पे, क्या क्विज है, क्या नॉलेज है। रिमेंबर इट्स द रूल ऑफ 10 questions from 10 YouTube experts worth 10 lakh rupees. भाई ये एक्सपर्ट्स जो हैं आप इनको जानते हैं, बिल्कुल आप इनके चैनल्स को फॉलो करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप इनसे काफी कुछ सीखते भी हैं. एंड टुडे इट इज टाइम टू पुट ऑल दैट नॉलेज टू गुड यूज बिकॉज दिस इज द शो वेयर यू प्ले, लर्न एंड अर्न. And of course, whatever you win here today, we will be donating the exact same amount to India's COVID relief effort. But pehle, even though they need no introduction, let's meet our 10 expert YouTube creators who will be asking these questions. Hello everyone. There you go. Pehle, Arun, let's ask you because you are our environment expert. The color of your shirt, this lovely blue, this is the blue we want our sky to be. पर हमारा sky तो grey हो गया है, Arun. We belong to planet Blue, don't we? That's what makes us so different from the other lifeless planets. And our cities, our skies have to be this color, unfortunately. Each of us is adding to that gray matter without thinking from this gray matter. That's the problem. So what can we do? How can we use our gray matter to reduce the gray matter? The first thing is the WWW that dominates our life is the World Wide Web, right? Rather, we should start thinking about waste, water and wildlife. Nice. तो गौरव और गणेश से बात करते हैं, हमारे दो चेस चैंपियंस जो यहाँ पर है. जी मुझे आपके पीछे वाला बोर्ड नजर आ रहा है. गणेश, मैं जानता हूँ कि आप भी चेस चैंपियन हैं. तो गौरव आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपका नाम बहुत अच्छा लगता है मेरे को. माय फेवरेट नेम. तो आप जी आप बताइए फर्स्ट मूव क्या है गणेश के लिए? Ganesh, okay, I start with e4. All right, I play c5, the Sicilian defense. Whoa. Everybody else is looking at them and saying show-offs. Rohan, how are you? I'm fine. Super excited to be here today. But tell me something. How did you like Gaurav and Ganesh's opening moves? They are good. They are the standards. They are powerful moves. But I'm pretty sure I could beat them at either of the moves. Your questions just got tougher. Rohan, of course, is a 8-time Sudoku national champion. पर आज यहाँ पे सुडोकू वगैरह काम नहीं आने वाला क्योंकि अलग अलग टॉपिक हैं आपके पास. तो अलग अलग टॉपिक आपके काम आएंगे. You of course can win up to 10,24,000 rupees. You have 10 questions to do that. पर आपको ये भी बता दूं कि there are challengers to the challenger. In the player pool, we have two people from the last episode, Tanishq and Insha, जो अभी भी हमारे साथ हैं. Hi Tanishq, hi Insha. I hope you guys are ready. Remember, you only have this episode to be the challenger, so all the best to the both of you. और दो नए चेहरे दिख रहे हैं हमको प्लेयर पूल में, अभिषेक and Lavanya. Abhishek, how are you? I'm good, Gaurav. I'm good. Abhishek, are you nervous? Are you excited? What are the emotions you have? And a little stressed out, but I think that will only boost me up.
So obviously you only can get to be a challenger once Rohan leaves. So Right. what is the energy you're sending him? 3 questions, 4 questions? That's all? No, I hope he gets knocked out at the math question. Whenever that is. Okay, excellent. We also have Lavanya who's joining us. Hi, Lavanya. Where are you joining us from? Hi, I'm from Delhi. Okay, and this baby picture behind you is you? Yeah, it's me. It's you! Yeah. That's so sweet. You're looking totally chill. You were a chiller kid, were you? You look like a total chiller. Yes, I was. This is from some fancy dress competition. I was Miss Universe. So yeah. Ah, nice. And I have heard that Michael Phelps is one of your favorite athletes. Is that correct? Yes, sort of, because swimming is one of my favorite sports. So yes. ठीक है मैं ऐसे आपको मतलब जेलस नहीं या शो ऑफ नहीं कर रहा मैं पर ये देख हाँ जी. ठीक है Wow. Nice. Amazing. ऐसे ही मैंने कहा ना कभी कभी मैं भी कभी कभी ना अपने दोस्तों को पब्लिसिटी दे देता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा लड़का है I just hope that both of you can be golden in today's episode, but you will only get a chance once Rohan slips up. And I don't think Rohan is looking like slipping up, but you have 15 seconds. All 4 of you have 15 seconds to answer every question in the play along when Rohan is being asked his questions. So आइए रोहन के पास चलते हैं. रोहन, तो आपने देख लिया भाई ये चारों रेडी हैं आपको डिथ्रोन करने के लिए. हिलना मत बड़ा, हिलना मत अपनी जगह से. Yes, yes. We will reveal your silver tier to you now. These are your 5 experts. These are the 5 subjects. Let's reveal Rohan's silver tier. You have Nidhi with health. You have Gaurav with GK, Sucharita with movies, Seema with English, and Roshni with science. So ये हैं आपके 5 subjects. You don't decide which the 5 subjects are, but you do decide in what order the questions come to you. तो मैं आपको 1 minute देता हूं to decide that order. And in the meanwhile, I want to tell all our viewers who are sitting at home, जैसे ही creator सवाल पूछने आएंगे, आपकी live chat window में एक poll card आ जाएगा with the question and 4 options for the answer. Only one option is correct. All you have to do is select your answer on this poll card. And of course, you need to answer that question. And while you're sitting at home and playing, you of course can help in India's COVID relief effort. Okay, let's come to Rohan now. Rohan, have you decided your first question? But 2,000 rupees is going to come from who? I think काफी difficult choice है. None of my favorite subjects are there. But I think I will start with science. Oh, okay. पर एक मैं आपसे जरा पूछ सकता हूँ आपके favorite subjects हैं कौन से? बचपन से मुझे mathematics बहुत पसंद है. So that would have been my obvious favorite choice. Well, I am thinking that if that's a subject that you like, I hope that question is your 10 lakh question. Yes, that could also be a good strategy. Yes. रोशनी मैम, साइंस के बारे में ये जो बोल रहा है, कैसा लगा आपको ये जान के? कैसा लगा? इसकी जिंदगी में 2000 रुपए वाला ही अंधेरा कर दो. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी क्योंकि पहला सवाल है, पहले चैलेंजर हैं आज के, तो मैं रोहन जरूर चाहूंगी कि आप इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दो. तो चलो देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग. जैसे ऐसा हमने नोटिस किया राइट कि कभी जैसे हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है या फिर हमारे इमोशंस जब बहुत ज्यादा बाहर आ रहे होते हैं या बहुत हाई होते हैं, तो हम अक्सर ही ऐसा कहते हैं कि पास्ट द बैरोमीटर ऑफ माई इमोशंस. सो माई क्वेश्चन टू यू इज, what does a barometer measure? Your options are option A, wind speed, option B, amount of rainfall, option C, atmospheric pressure, or option D, temperature. Temperature तो definitely नहीं है क्योंकि I think temperature is measured using a thermometer. Rainfall, wind speed, and atmospheric pressure. So I have a feeling it should be atmospheric pressure. Yeah, I think I'll go with C, atmospheric pressure. Should we select it for you? Yes.
Okay. So C, atmospheric pressure को select किया जाए. I of course just stopped listening the minute I heard bar. उसके आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, तो रोशनी मैम आप बताइए. So Rohan, you got the correct answer. Congratulations. So big round of applause and played really well. So barometer एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं. इनफैक्ट ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, किसी भी एरिया का जो एयर प्रेशर है, वो हमें बताता है कि वहां का क्लाइमेट जो है वो कैसा होने वाला है. So very well played and keep going. Thank you. So that's 2,000 rupees in the bag for you. That means we go to question number 2. This one is worth 4,000 rupees. बताइए कौन सा टॉपिक, कौन से क्रिएटर? Next subject, I would pick movies. Lights, camera, action, Sucharita. Hello. Hello. Very nice. I'm very excited because जब ऐसे पढ़ाकू टाइप के लोग सिनेमा के बारे में बात करते हैं ना, तो वो कभी-कभी बड़े आसान से क्वेश्चन पे स्टम्प हो जाते हैं बेचारे. So let us see कि इस पर आपका सही जवाब आता है कि नहीं आता है, रोहन. मेरे लिए ये एक्चुअली एक डबल एज स्वॉर्ड जैसा है, बिकॉज मुझे हॉलीवुड काफी पसंद है और मतलब मैंने बॉलीवुड उतना ज्यादा देखा नहीं है. सो आई एम होपिंग, प्रेइंग इट्स हॉलीवुड. अनफॉर्चुनेटली हम बात करने वाले हैं इस वक्त बॉलीवुड की, रोहन. सो लेट्स गो बैक अ फ्यू मंथ्स. ओके, 2020 बॉलीवुड के लिए इट वाज अ लीन ईयर. कुछ ज्यादा मूवीज रिलीज हो नहीं पाई. ऐसी ही एक फिल्म पर मेरा आपसे सवाल है, यू नो, कीप दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, that which of the following is also the name of a 2020 Hindi film? 4 options. A, chess. B, carom. C, monopoly. D, ludo. Batao. So I'm pretty sure it's not chess because chess मैं बहुत खेलता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, and I've definitely not heard of any film called chess. Between Monopoly also, I don't sort of recollect any such movie called Monopoly. Ludo सुना हुआ है, but I mean I've definitely, I don't think I've watched any Hindi film last year. और काफी कम फिल्म्स भी आई है. कैरम भी मुझे नहीं लग रहा है, so I would go with D, Ludo. So what do you want to do? Should we select D, Ludo? Yes, I think I'll go with D, Ludo. Okay, so Rohan has decided that D, Ludo is his answer. Let's select that for him. So Charita, please reveal the correct answer. Ludo is the correct answer. Well done. Yes. So that means that you are at 4,000 rupees after answering that second question. Sucharita, this was an Anurag Basu film, wasn't it? That's right. This was an Anurag Basu film, and in true Anurag Basu fashion, it was just a fantastical bit of cinema. Dark comedy film genre में इसको डाल सकते हैं. अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा, पर्ली मानी, पंकज त्रिपाठी, फातिमा सना शेख. These are all the titles. So it was a big ensemble film. आज रात को ही मैं 100% ये मूवी देखने वाला हूँ. अच्छी पिक्चर है, देख लो, अच्छी है, मजेदार है. ओ बेटा जी, अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो है वर्थ 8,000 रुपीज. सिल्वर टीयर में 5 सवाल हैं, 2 आप क्लियर कर चुके हैं. दिस इज क्वेश्चन 3 फॉर 8,000 रुपीज. व्हाट इज द टॉपिक? So the third topic, I will go with English. इंग्लिश. मुझे पता चला है कि सीमा जी जो हैं वो एम्बीडेक्स्टर, अब दोनों हाथों से लिखती है. Yes, Gaurav, I can definitely write with both my hands. I'm ambidextrous. I'm actually left-handed, but I'm ambidextrous. Yes. और रोहन, do you also do that? आप भी क्या दोनों हाथ से लिख सकते हैं? हाँ, so actually मैं राइटी ही था, मतलब बचपन से, लेकिन स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई फ्रैक्चर्ड माय राइट हैंड. तो उसके वजह से मैं काफी कुछ चीजें लेफ्ट हैंड से करने लगा. एंड अनफॉर्चुनेटली सेकेंड स्टैंडर्ड में फिर से आई फ्रैक्चर्ड माय राइट हैंड, द सेम बोन. सो लिटरली मैं 2 साल ऑलमोस्ट ऐसे बेड रेस्ट पे था और काफी चीजें मैं लेफ्ट हैंड से करने लगा. बट आई थिंक उस टाइम से लाइक टिल नाउ आई थिंक आई हैव स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विद माय लेफ्ट हैंड, और अभी मैं काफी कुछ चीजें दोनों हाथ से कर सकता हूँ. नाइस. तो मेरा सवाल आपसे ये है
कि ये जो सीमा जी आपसे सवाल पूछेंगी ये आपका दाएं हाथ का खेल होगा कि बाएं हाथ का खेल होगा। आइए सीमा जी से ही पूछते हैं कि सवाल क्या है। So, Rohan, tell me, why do you not like English? So it's more about liking other subjects more. So relatively, मतलब I have a stronger connection to, let's say, maths. और मैं sportsman हूँ, तो sports से भी मेरा मतलब काफी knowledge वगैरह है. So compared to all the other subjects, I think English is little on the lower side. Well, anyway, this question is going to be a grammar question for you. So, my next question to you, you need to complete this sentence. So, here's the sentence. We have dash more sweets since that wonderful bakery opened down the block. The four options are option A, 8, option B, been eating, option C, had better eaten, and option D, been eaten. We have 8 more sweets. That doesn't sound too right. We have been eating more sweets. Sounds okay. We have had better eaten more sweets. This doesn't sound too correct. We have been eaten more sweets. This also does not sound too correct. So I think I will go with B, been eating. So should we select that for you? Yes. Let's go with B, been eating. Yep. Okay, so we'll select that for you. It is B, been eating. अगर सही जवाब तो B for बोलबाला आपका, अगर गलत जवाब तो बीन बजाते आप यहाँ से बाहर। सीमा जी बताइए। Your answer is definitely right, and we have been eating is definitely the correct answer. Congratulations. Well done with that. This sentence is actually mentioned in the present perfect continuous tense, and the grammatical construction or the syntactic structure is the subject, followed by have or has. In this case, there is a have, followed by the verb in the ing form. So congratulations. You did pretty well for someone who does not like English. So good job. Well done, Rohan. Well, you were good in the past. You've been good in the present. I hope it's continuous for you through the silver tier. You have now won 8,000 rupees. For me, that statement, I think, was we have never eaten any sweets since that bakery opened because I'm diabetic and I know technical Guruji doesn't eat any sugar at all, right? हाँ भाई, बिल्कुल white sugar नहीं ना? नहीं, अभी के लिए कम किया है पिछले 1 साल से एक्चुअली, जब से वो बेकरी खुली है तब से। वो फ्री में बेचते थे ना घर पे। Ranveer is actually going to share at the end of the episode. He's going to share with us a recipe for a healthy chocolate cake. ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा concept exist करता है healthy chocolate cake? ऐसा concept exist करता है लेकिन सिर्फ दिमाग में। निधि, we can only eat chocolate cake दिमाग में। No, एक्चुअली हम कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा फंडा हमेशा कुकिंग का ये रहता है कि फैट ज्यादा डाल के और चीनी ज्यादा डाल के तो खाना कोई भी टेस्टी बना सकता है। Your biggest challenge is if you don't do all those two things and still make foods tasty. So I differ here. I think chocolate cake can be healthy also. हाँ, आज लंच में सबके लिए मैंने ब्रोकली का केक मंगाया, ठीक है? तो सब खाना मुझे बताना कैसा था, ठीक है? अब हम चलते हैं रोहन के पास। रोहन, of course, is now sitting on the cusp of question 4. This is worth 16,000 rupees. You have 2 choices still left in the silver tier. Who's asking you the 4th question? The next one, I will go with GK. Excellent. So you're going with Gigi, who will be asking you GK. Gaurav, over to you. So Rohan, what type of question you would like? An easy one or a difficult one? I hope very, very easy one. Rohan, I'll ask you a very, very easy question, probably the easiest. The total area covered by the smallest state of India is only 3,702 square kilometers. It occupies only 0.11% of the total land mass of our country. तो मेरा आपसे सवाल ये है, what is the capital of the smallest state in India? And your options are option A, Panji, option B, Chennai, option C, Agartala, or option D, Bhopal. So thinking about these 4 cities, चेन्नई तो मुझे पता है तमिलनाडु में है, and
वो तो काफी बड़ा स्टेट है. भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश एंड वो भी बहुत ही बड़ा स्टेट है. पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा. गोवा छोटा है. अगरतला, if I remember correctly, is the capital of one of the northeastern states. Might be Tripura. So it has to be between A and C. I think Goa is small. Just trying to confirm or think whether it is the absolute smallest state. Yeah, I think I will go with A. Should I select that for you? A. Panaji, so known as Panjim. A. Panaji or Panjim is what is being selected by Rohan. तो आइए उसको बनाते हैं ग्रे और गौरव बताएंगे कि ये होता है रेड कि ग्रीन. So Rohan, there is one state in India जिसका हम सब प्लान बनाते हैं पर जाते कभी नहीं है. That is Goa. And yes, Panje is the right answer. Very well done. Yes. Congratulations, Rohan. So that's 16,000 rupees for you. इन्होंने बताया नहीं था ना कि अगरतला कहाँ का कैपिटल है? It is the capital of Tripura, the northeastern state. So he was right that it is a northeastern state. And Panje is the capital of course, Goa, and it is the headquarter of North Goa district. And Goa is India's smallest state by area and fourth smallest by population. So very well done, Rohan. That's 16,000 rupees at the end of 4 questions, which leaves you with the last question in your silver tier. This one is worth 32,000 rupees if you get it right. Remember, if you get it wrong, you lose half the money that you have at any point in time and you have to leave the game. यानी कि अगर ये wrong हुआ तो आप 8,000 रुपए यहाँ से लेके जाएंगे. पर पीछे नहीं देखने का, थोड़ा आगे देखने का. Your last question, as we know, just one expert left, Nidhi with health. So over to you, question 5 for 32,000 rupees. Nidhi, before we ask the question, tell me how is Rohan's breathing doing? Is it doing well? Do you want to give him some breathing tips on how when the pressure becomes more on the barometer? Rohan initially बोल रहे थे कि he has been interested in sports. So कुछ sport खेला है? बचपन में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन बहुत खेलता था. But then I got into chess, which is a non-physical sport. और अब तो काफी सुडोकू वगैरह करता हूँ. So that's my main sport अभी. क्या आपको पता है कि ये एक मिथ है कि चेस इज अ नॉन फिजिकल स्पोर्ट क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी लगती है टू सिट स्ट्रेट लाइक दैट एंड विश्वनाथन आनंद runs almost 10 or 15 kilometers every day. I'll tell you that much. तो एक्सक्यूज मत बनाना. It requires lot of stamina. हाँ, अभी जैसे ये गेम खत्म होगी ना तो उठ के भागना 10 किलोमीटर. पर अभी मत भागो, अभी यहीं रहो और निधि भी आपको भगाएंगे नहीं यहाँ से. ठीक है? प्रॉमिस निधि? कोई punishment नहीं for choosing health as the last option. Not today. So Rohan, जब आप एक एक्टिव स्प्रिंट में ब्रेकआउट करते हैं तो all your muscles go into all out. What happens is that there's a burning sensation in the active muscles because of that. So आपका सवाल है the buildup of which acid causes muscle fatigue while running? And your options are option A, phosphoric acid, option B, carbonic acid, option C, lactic acid, or option D, sulfuric acid. ये काफी मुश्किल लग रहा है. आई थिंक इसके लिए मुझे हेल्प लेना ही पड़ेगा. तो आपके पास 3 असिस्ट हैं. आस्क प्लेयर पूल, शेयर अ क्लू और चेंज द क्वेश्चन. आस्क प्लेयर पूल में आप देख सकते हैं कि आपके बाकी 4 कॉलीग्स ने क्या आंसर दिया है एंड देन यू कैन पिक वन ऑफ दोज इफ यू फील लाइक, इफ देयर इज अ कंसेंसस. इन चेंज द क्वेश्चन, एज यू आर वेल अवेयर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि सवाल ही चेंज कर देंगी निधि. और अगर शेयर अ क्लू आप मांगे तो निधि आपको एक क्लू देंगी जिससे इस सवाल का जवाब बहुत आसान हो जाए. Somehow I
I have a feeling it's between carbonic and sulfuric, but I'm not sure. I think I'll go with get a clue. Okay, so you are choosing share a clue. Yes, share a clue. Okay, so Rohan is playing that assist. Nidhi, एक इनको clue दीजिए जिससे सारा मामला साफ हो जाए. ओके रोहन, सो आपका क्लू है कि ये खट्टे मिल्क प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है. Okay. Milk products में I think lactic acid is the primary ingredient. So I will have to go with C, lactic acid. C, lactic acid is what you're choosing. Carbonic और sulfuric में आप confused थे, पर इस clue के बाद lactic is come up right in front. That's the one that we're selecting for you. Nidhi, दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए. After the clue, at least you gave the right answer. Just to give you a little bit of background, lactic acid आपके muscles में तब generate होता है जब anaerobic metabolism होता है. That means there's no burnout of there's no oxygen available. तो oxygen की कमी में जब metabolism होगा तो you will have lactic acid accumulation in your muscles, and that is why it hurts after a rigorous workout the next day. Well, there you go. So congratulations, 32,000 rupees and clearing the silver tier. First 5 questions done, halfway down. Rohan, how do you feel? Feels good. I think these were tough subjects for me, and hopefully the gold tier subjects are better. बिल्कुल, क्योंकि आपके पास अब जो है, अब कहता हूं जैसे कि मामला ये सीरियस होता जा रहा है, राइट? क्योंकि जैसा कि आपने देखा गोल्ड टियर में अभी आप 32,000 में है, गोल्ड टियर में आप 64, 1,28,000 और 2,56,000, 2.5 लाख रुपए तक आप पहुंच सकते हैं सिर्फ 3 सवालों में, राइट? बिफोर वी गो देयर, लेट्स हैव अ लुक एट आवर प्लेयर पूल एंड से कि हमारे चैलेंजर को कौन चैलेंज करेंगे, बिकॉज़ द क्वेश्चंस आर गोना गेट टफर. वी ऑफ कोर्स हैव Tanishq and Insha and Lavanya and Abhishek. Let's have a look at the leaderboard and see how they did in the silver tier. How many did who get correct? Abhishek and Insha in the lead, 5 out of 5. High five to both of you. Well done. Lavanya with 4 and Tanishq with 3. So we have Abhishek and Insha right now. बिल्कुल आप दोनों के बीच में है, बड़ा पौधा और छोटे पौधे के बीच में. देखते हैं कि इनमें से कौन एक महान वृक्ष बनता है, पर वो तो तब बनेगा जब रोहन जाएंगे, और रोहन अभी नहीं लगता कि कहीं जाने वाले हैं. रोहन है यहाँ पे. तो आइए रोहन, देखते हैं what the next challenge for you is. The next challenge of course is the gold tier. 3 questions. So let's reveal your gold tier to you. रणवीर, क्या खिचड़ी पकाएंगे आप आज यहाँ पर रोहन के लिए? गोल्ड टियर क्वेश्चन जो है, will it be about some dangerous things like fenugreek and aspartame and I'm going to ask him कि ये knife कौन से metal का बना हुआ है? Knife steel से बनता है ना? Valerian steel. मैंने Game of Thrones देखी है. Valerian steel.